Hi, students of 12th Science Maths. Today we see the differentiation of implicit function. Before we see that, we define explicit and implicit function. What is meant by explicit and implicit function? Before differentiation of implicit function. तो explicit और implicit function क्या होता है? ये टॉपिक देखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि explicit function और implicit function का डेफिनेशन क्या है. तो सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x. जब भी आप कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ एक्सप्रेस इन only one terms, only y is expressed completely in terms of x, or x is a function of y. That means x is completely expressed in terms of y. For example, y is a x square plus 2x plus 7. X is a root of y square plus 1. These are examples of explicit function. That means in case of explicit function, y is completely expressed in terms of x, or if x is a function of y, x is completely expressed in terms of y. Such a function is called as explicit function of x or y. When y is a function of x, that is y is completely expressed in terms of x, then y is an explicit function of x. Whenever x is a function of g of y, that means x is completely expressed in terms of y, then x is an explicit function of y. But for an implicit function, we have given that equation involving two terms, x and y. कि आपको x और y के टर्म होने वाला इक्वेशन दिया होता है. We have given that term equation involving both x and y. But in that equation, we cannot express y in terms of x or x in terms of y. In such case, we see that the function is implicit function of x or implicit function of y. Such a function can be written as f of xy is equal to 0. This is a implicit function of x or y, because in such case x is not expressed in y or y is not expressed in x. तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा ये आपको देखना है. तो x cube plus 3xy is equal to sin y. This is the example of implicit function, because in this equation y cannot be expressed in terms of x, or x cannot be expressed in terms of y. X cube plus 3xy minus sin y is equal to 0. On LHS, there is a function of f of xy. This is an equation of both variable x and y, but cannot be expressed in each other way. तो ये implicit function का differentiation का एक एग्जांपल आप देखिए. एग्जांपल क्या है? फाइंड dy by dx for
implicit function given by x plus root of xy plus y equal to 1. ये क्या है? implicit function. उसका क्या फाइंड करने का है? dy by dx, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन कैसा हो. तो differentiate the given equation with respect to x on both sides. बोथ साइड का डिफरेंशिएशन आपको लेना होगा. x का डेरिवेटिव टी डी एक्स ऑफ x प्लस रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस y का डेरिवेटिव कंसिडर एज y एज अ फंक्शन ऑफ x dy by dx. 1 का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 1, x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई यूजिंग चेन रूल. y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव 0, इट इज कांस्टेंट फंक्शन. नाउ 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई, xy was the derivative because it is product using product rule. X dy by dx plus y plus dy by dx. तो अब 1 अपॉन 2 रूट एक्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा. 1 प्लस 2 1 अपॉन 2 रूट एक्स वाई into x dy by dx plus y upon 2 root x y. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया इस टर्म प्लस दिस इज dy by dx. ये इम्प्लिसिट फंक्शन होने की वजह dy by dx के इधर यहाँ दो टर्म है. There are two terms of dy by dx to the LHS side because given function is implicit function. Therefore, we collect them. These are two terms of dy by dx. We collect them as x 2 into of xy plus 1 into dy by dx is equal to remaining terms are transferred to the LHS. We have minus 1 plus y upon 2 root x. On simplifying, we have x plus 2 root xy upon 2 root xy dy by dx. 2 root xy plus y upon 2 root xy. अभी ये डिवाइड कैंसिल हो रहा है, तो dy by dx क्या आएगा? 2 root xy plus y upon 2 root xy plus x. This will be the final answer. तो इसमें डेरिवेटिव कैसा फाइंड किया जाता है आप देख सकते हैं. तो यहां नई बात क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx का टर्म ये एक ज्यादा आ सकते हैं दोनों तरफ LHS और RHS में. उसको क्या करने का है आपको वो एक साइड में कलेक्ट करके dy by dx कॉमन निकाल के dy by dx रिजल्ट निकालने का है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है. ओके